Today I will start polynomial. So first of all, what is polynomial? Poly. Poly means many. बहुत या बहुत से many. Nomial. Nomial is terms. Pad. For example, fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on an x to the power. So this kind of expression where there are many terms and these terms contain some constants. These are constants and some variables like x, x square, x cube, x to the power. Generally in mathematics, we take a, b, c, d as constants and x, y, z as variables. So what is constant and what is variable? We should know that. See, if a term has a fixed value, then it will be a constant. So these are constants and they are attached to variables. What is variable? Variable is the term which can vary, which may vary, या जिसकी अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे कांस्टेंट या कोफिशिएंट कहेंगे यहाँ पे। तो इस वेरिएबल के साथ ये कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ x सब जगह जो हमने लिया है ये वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। अब इसमें हम x की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए टर्म विच वी हैव assumed and a0, a1, a2, a3 these are coefficients of x. We have not written x here, but we can write as x to the power 0 because x to the power 0 is equal to 1. So this kind of expressions where there are many terms and these terms have some constants and some variables is known as polynomial. And there are many type of polynomials. For example, monomial, binomial, trinomial, tetranomial, pentanomial, hexanomial, septanomial, octanomial, nonanomial and decanomial. So as we know, mono means 1. So monomial is a polynomial which has only one term. For example, ax. Binomial bi means 2. So if it has two terms, then it will be a binomial. For example, ax plus c. So these are the examples. Trinomial
that means which has 3 terms. For example, ax square plus bx plus c, and so on. Tri, tetra, penta, hexa, septa, octa, nona, and deca. That means 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the number of terms these polynomials may have. So this is just the introduction of polynomial. What is polynomial? So any algebraic expression which has fx is equal to ax 0 plus ax1 plus ax square plus ax cube and so on, these are called polynomials. Now we take some live examples of polynomials and how they are handled. For example, 2x plus 3, this is fx. So this variable, that is x, has many number of values which it can have. It can have x is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. It may have infinite number of values. So the value which gives the whole expression equal to 0 is called the 0 of the polynomial. That means 2x plus 3 is equal to 0. Therefore, 2x is equal to minus 3. So x is equal to minus 3 by 2. So this value of x will be called 0 of the polynomial. So if we put this value in place of x, the whole expression will become 0. Let us see what happens. 2 into minus 3 by 2 plus 3. So 2 is cancelled by 2. So minus 3 plus 3. So this is 0. So minus 3 by 2 is the 0 of the polynomial 2x plus 3. Now, according to the highest power of the variable, we can divide the polynomial into different type of polynomials. तो देखिए, जैसे अभी हमने जनरल पॉलिनोमियल लिखा था a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 and so on an x to the power n. So the highest degree of the polynomial is n. So degree of this polynomial is n. So for fx is equal to a0 x0 plus a1 x to the power n plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 and so on up to an x to the power n, the degree of this polynomial is n. That is highest power of the variable. तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो हैं x0 x1 x2 x3 और ये x to the power n तक गए। तो
तो जो सबसे बड़ी घात है इस चर संख्या की, x क्या है, एक चर संख्या है और ये क्या है, एक अचर संख्या है। तो यहां पे इस चर की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, n है। तो इसलिए यहां पे डिग्री जो है इसकी वो कहलाएगी n। तो इस डिग्री के अकॉर्डिंगली इनके डिफरेंट नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉलिनोमियल, zero polynomial is fx is equal to a x to the power 0, and you know that x to the power 0 is equal to 1, so this will become equal to a. So any constant term is zero polynomial, यानी अगर अचर और चर इस तरह से हों कि कोई भी अचर संख्या है और जो चर है उसकी घात 0 है तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चर संख्या है उसकी घात 0 है, इसीलिए इसका नाम जीरो पॉलिनोमियल। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है fx इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो गई। सेकंड है लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। वी जनरली से इट लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट ए लाइन। सो fx इज इक्वल टू ax प्लस by plus c is equal to 0. So this kind of polynomial is linear equation. तो linear equation की खास बात आप क्या देख रहे हैं? The power of the variables is equal to 1. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हैं, तो इसमें खास बात क्या होगी कि इनकी जो पावर है वेरिएबल की वो 1 होगी। देन इट विल बी ए लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। So fx is equal to ax square plus bx plus c. So in this equation, the highest power of the variable is 2. So this kind of polynomials are called quadratic polynomial. तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें चर संख्या की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चूंकि x की जो घात है वो 2 है, तो जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जहां पे चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। So this kind of polynomial is known as cubic polynomial. So what is the speciality of this type of polynomial? The highest power is 3. तो इसमें खास बात यही है कि जो चर संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी, तो 3 घात वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह बाकी नाम भी हैं, जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल के से पहले नाम लिए कि एक पद है तो
मोनोमियल 2 है तो बाइनोमियल 3 है तो ट्राइनोमियल। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी पावर के अकॉर्डिंगली भी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक या टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, we can give all these names. Okay, now how can we find out the value of the variable? If there are two variables, then to solve this type of equation we should have at least two equations. Only then we can solve. For example, a1 x plus b1 y plus c is equal to 0. And the other equation should be of the form a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0. So if there are two equations in polynomial of two variables, only then you can solve. But if you have only one variable, for example, fx is equal to 3x plus 4, it can be solved easily. Just put equal to 0. So 3x is equal to, taking 4 to the right hand side, minus 4. So x is equal to minus 4 upon 3. So this can be solved if it has only one equation. But if it has two variables, then we can solve the equation only and only if they have two equations or two polynomials. तो अगर दो चर संख्याएं हैं तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को तभी हल कर सकते हैं जब हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हों। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है। तो अभी जस्ट हमने पॉलिनोमियल का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करने का मेथड डिस्कस करेंगे।